जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 4 श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारं व्ययम्। मनुष्यलोक में जो ये चारों वर्ण दिखाई पड़ते हैं वे भी मैंने ही तटस्थ रहकर गुणों और कर्मों के विभागों के अनुसार उत्पन्न किए हैं। अन्यथा हे अर्जुन, ये सब मनुष्य मूलतः एक ही वर्ण के हैं। जन्म से इनका विभाजन हिंदू धर्म पर अभिशाप एवं कलंक है। भगवान का किसी भी कर्म में राग द्वेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कर्मों से सर्वथा अतीत है। उनकी अध्यक्षता में अथवा उनके सकाश से उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है। इस कारण लोक व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वथा उदासीन है। कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। The Lord says, "The fourfold caste has been created by me according to the differentiation of guna and karma. Though I am creator thereof, know me to be the actionless and changeless." This is the shloka stanza that has been greatly misused by the upholders of the social crime in our recent times, styled as the caste system. Varna in the yogic sense means different shades of texture or color attributed to the triple gunas. The sattva is considered as the white, rajas as red, and tamas as black. A person is essentially the thoughts that he or she entertains. From individual to individual, even when the thoughts are superficially the same, there are clear distinctions contributed by the temperaments in each individual. On the basis of these temperamental distinctions, the entire mankind round the globe has been, for the purpose of spiritual study, classified as the four castes or varnas. However, later on in the power politics of the early Middle Ages in India, this communal feeling cropped up in its present ugliness, and in the general ignorance among the ordinary people, the cheap pundits could parade their assumed knowledge by quoting in bits the shlokas like the present one. The decadent Hindu Brahmin found it very convenient to quote 1/4 of the shlokas and repeat, "Chaturvarnayam maya shishtam," that is, I created the four varnas, and give this tragic social vivisection a divine look having a godly sanction. They who did it are in fact the greatest blasphemers that Hinduism ever had to reckon with. For Vyasa, in the very same line of the shloka, as though in the very same breath, describes the basis on which this classification was made when he says, "Gun karm vibhagashah," that is, by the differentiation of the mental quality and physical action. This is the true definition of the varna, which not only removes our present misunderstanding, but also provides us with some definite data to understand the true significance of the word varna. Not by birth is a person Brahmin,
but by cultivating good intention and noble thoughts are sattvic, and his action too. A kshatriya is one who is rajasic in thoughts and actions. A shudra is not only one whose thoughts are tamasic, but he lives life of low endeavors in satisfying his base animal passions and flesh appetites. O. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 4 ശ്ലോകം 13 ചാതുർവർണ്ണ്യാമയ സൃഷ്ട ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയമം. മനുഷ്യലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന 4 വർണ്ണങ്ങളെയും ഗുണങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ച് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലയോ അർജുന, ഈ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നു തന്നെയാണ്. ജനനം കൊണ്ടുള്ള അവയുടെ വിഭജനം ഹിന്ദുമതത്തിന് ഒരു ശാപവും കളങ്കവുമാണ്. ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഈശ്വരന് അഭിനിവേശമോ കർമ്മഭാവമോ ഇല്ല. അവ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവൃത്തികൾക്ക് അതീതമാണ്. അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലും സാന്നിധ്യത്തിലും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ജനകീയ ആചാരത്തിൽ ഈശ്വരനെ പ്രവൃത്തികളുടെ കർത്താവായി കണക്കാക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വരൻ പൂർണ്ണമായും നിസ്സംഗനാണ്. അവന് അതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरण. अध्याय 4 श्लोक 13. मानव जगात दिसणारे हे 4 वर्ण देखील मीच निर्माण केलेले आहेत. गुण आणि कर्मांच्या विभागानुसार तटस्थ राहून. अन्यथा हे अर्जुन, हे सर्व मानव मूलतः एकाच वर्णाचे आहेत. जन्मानुसार त्यांची विभागणी हिंदू धर्मावर एक शाप आणि कलंक आहे. देवाला कुठल्याही कृतीत आसक्ती, द्वेष किंवा कर्तृत्व नाही. तो नेहमीच त्या कृतींच्या पलीकडे असतो. त्याच्या नेतृत्वाखाली किंवा त्याच्या साकाशाने त्याचा स्वभाव स्वतःच सर्व कृती निर्माण करतो. या कारणास्तव सार्वजनिक व्यवहारात ईश्वराला त्या कर्माचा कर्ता मानले जाते. प्रत्यक्षात ईश्वर पूर्णपणे उदासीन आहे. त्याचा इतरांशी काहीही संबंध नाही. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసంత మహాత్మా శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 4 జ్ఞానయోగము శ్లోకం 13. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. మానవలోకంలో ఏ 4 వర్ణములు కనిపించున్నవో వాటిని కూడా తటస్థుడనై గుణకర్మ విభాగమును అనుసరించి నేనే సృష్టించితిని. అయితే ఓ అర్జున, ప్రారంభంలో మానవులంతా ఒకే వర్ణం వారు. జన్మను బట్టి ఈ వర్ణ విభజన చేయుట హిందూ ధర్మమునకు ఒక శాపము మరియు కళంకము. పరమాత్మకు ఏ కర్మయందు కూడా రాగద్వేషములు కానీ కర్తృత్వము కానీ లేదు. ఆయన సర్వదా ఈ కర్మలకు అతీతుడు. ఆయన యొక్క సారథ్యంలో, ఆయన యొక్క సామర్థ్యంతో, ఆయన యొక్క ప్రకృతే సమస్త కర్మలను చేయుచున్నది. ఈ కారణంగా లోక వ్యవహారమునందు పరమాత్మే ఆ కర్మలకు కర్తగా భావించబడుతున్నాడు. నిజానికి పరమాత్మ ఉదాసీనుడే తప్ప కర్మలతో ఆయనకు ఎంత మాత్రమూ సంబంధము లేదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. मनुख लोक में जे 4 वर्ण अछि, ओ हम तटस्थ रहि कऽ गुण आ कर्मक विभाग सब अनुसार बनेने छी. नहीं तऽ हे अर्जुन, सब मनुख मूलतः एके वर्णक अछि. जन्म सँ भेल ई विभाजन हिंदू धर्म पर अभिशाप आ कलंक अछि. भगवानक कोनो कर्म में ने राग अछि, ने द्वेष, ने कर्तापन के भाव. ओ सदिखन सब कर्म सँ सर्वथा अतीत छथि. हुनकर अध्यक्षता में वा हुनकर सकाश सँ प्रकृति सब कर्म करैत रहैत अछि. ऐसा लोक व्यवहार में भगवान कर्ता कहल जाइत छथि, मुदा यथार्थ में भगवान पूर्णतः उदासीन छथि.
कर्म से हुनकर कोनो संबंध नहीं छनि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।